जय हिंद दोस्तों, विस्की टॉकीज में आपका सुस्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल बख्शी उर्फ गोपाल शंख। पिछली भी ब्लॉग्स को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूं ऐसे ही, और हम बातचीत करते रहें, हमारा संबंध बना रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं, that got inspired from an incident that happened quite a few years back. तो हुआ यूं कि हमारे पास एक Hyundai Sonata हुआ करती थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल न्यू कार, राइट? मेरी पहली नई गाड़ी थी। तो Hyundai Sonata हमने खरीदी। उस जमाने में जो हमारा घर था भाड़े का था, और वो द पार्किंग वाज रोड साइड पार्किंग। सो गाड़ी खड़ी कर रखी थी। अब गाड़ी पर मैंने पीछे स्टिकर लगा रखे थे स्वस्तिक के, दो, राइट? टेल लाइट के दोनों तरफ, सेंट्रल साइड में। तो एक सुबह मैं उठा एंड आई went out only to find that the vehicle was vandalized. The tail lights were broken, and जो जहाँ पे स्वस्तिक लगा हुआ था, that area was dented by rocks. So obviously दुख हुआ कि somebody had vandalized my beautiful vehicle, right? मगर साथ में एक realization भी आई कि uh, that people need to be educated about this symbol, right? People think that this is a symbol of hate, this is a symbol of crime, obviously because Hitler used it for crime. फिर एक दिन मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि I knew that Hitler was a racist guy. I knew that he hated the Hindus and the Indians by and large, and he considered Indians as a lower class, inferior class. तो inferior class का symbol वो क्यों अपनाएगा और क्यों अपने आप को पॉपुलराइज करना चाहेगा, अपनी पहचान उससे बनाना चाहेगा? सो रिसेंटली मैंने कहा चलो कुछ एक्सप्लोरेशन की जाए इसके ऊपर, एंड आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स रिगार्डिंग दिस सिंबल। इससे पहले मैं सिंबल को हम जाने पहचाने, लेट मी टेल यू अ कपल ऑफ फैक्ट्स अबाउट अदर इंसिडेंट्स ऑफ जहाँ पे लोगों को सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ स्वस्तिक। सो जुलाई 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेंडाइज इन द यूएसए एक स्टूडेंट ने प्रपोज किया कि जो ये स्वस्तिक है, इट इज़ अ ऑस्पिशियस सिंबल, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंबल, इट हैज सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग। क्योंकि स्वस्तिक का जो मीनिंग है, स्वस्तिक इज अ संस्कृत वर्ड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सु अस्ति। सु मीन्स द गुड, द बेस्ट, द ऑस्पिशियस, and asti means may happen, may exist. So the meaning of the symbol, the meaning of the word swastik comes to be may good happen to you, may the best happen to you, may the auspicious happen to you, may the blissful happen to you. So इतने अच्छे meaning का ये symbol है that it should be inculcated in the curriculum and people should be educated about it. मगर यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, प्लान को जो प्रपोज था, और प्रपोजल को रिजेक्ट करके इनफैक्ट द स्टूडेंट वाज कंपेल्ड टू अपोलोजाइज publicly amidst the raging protest by the people against her. And she, I think, apologized in the end, and she had to, right? अप्रैल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन decided to put a complete ban on swastik symbol. So none of the students could have it on their vehicle. It could not be displayed anywhere. And I'm talking 2015. So definitely, and in April 2021, a petition is launched to ban swastik all over USA. Unfortunately, it was deeply opposed by, peacefully opposed by a lot of Sanatan Dharma. When I say Sanatan Dharma, I mean the Hindu people. So it was opposed and peacefully protested, and ultimately the ban was lifted or not implemented. So this is the thing, like because of bad media coverage and lack of positive media support, we have to suffer many a times. So this is what inspired me to further do more research, that why did Hitler even use swastik. So upon analyzing and researching, I found out some very interesting facts which I'm going to share with you now. So the first thing is,
Hitler, in his autobiography Mein Kampf, never ever used the word swastik. He did not use the word swastik at all. So, and neither in his speeches, जो उसने speeches दी थी, उनके collection को भी अगर जब analyze किया गया, they found that Hitler never used the word swastik in any of his speeches either. Then what was the word Hitler was using? So in Mein Kampf, the original copies of Mein Kampf and his speeches, the word Hitler has used is Haken-KREUZ or Haken-KREUZ. I don't know how it is exactly pronounced, but the spelling is HAKEN-KREUZ. So मैं अगर Haken-KREUZ बोलूँ तो प्लीज़ समझ आइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो Haken-KREUZ is the word he used. And it means, Haken means hooked, Kreuз means cross. So the word Hitler used was hooked cross, not swastik. And even in the medals that were given to the people by Hitler, the medals were also ending up in Kreuz. Like Ritter Kreuz was Knight's Cross, Balkan Kreuz, Beam Cross. There were many other medals that ended up with the word Kreuz. And of course, Haken-KREUZ. Oh, swastik? How is this possible? That other words that are ending with Kreuz, their meaning is cross, whereas when it comes to Haken-KREUZ, it is swastik. Doesn't make a sense. So मैंने कहा और देखें भैया क्या ये सिर्फ हिटलर यूज कर रहा था सिंबल या किसी और ने भी यूज किया इसे? तो मंथन करने पर मालूम पड़ा कि फिनिश आर्मी, जो फिनलैंड की आर्मी और एयरफोर्स है, they used to use this symbol from 1918 to 1920 on their aircrafts. जी हाँ, एग्जैक्ट सिंबल जैसा हिटलर यूज करता था वो फिनिश आर्मी और एयरफोर्स अपने जहाज़ों पर यूज करते थे. मतलब जैसे जैसे इंडियन आर्मी का तिरंगा बनता है एयरफोर्स के जहाज़ों पे, वैसे ये लोग हेकन-क्रूज बनाते थे. और जो फिनिश नाम है इसका, दैट इज हाका-रिस्ती. हाका मीन्स हेकन, रिस्ती मीन्स क्रॉस. सो हेकन क्रॉस हाका-रिस्ती, नॉट स्वस्तिक. अच्छा जी, इसके अलावा 1939 में ब्रिटेन कंट्री काउंसिल हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनाई गई, उस पर भी ये सिंबल लगाया गया था. सो द ब्रिटेन कंट्री काउंसिल headquarter building that was built in 1939 had the same symbol, Haken-KREUZ, on it. Besides this, US Army 45th Infantry Division had the same symbol on their jacket. Not only this, let's go further down. Just excuse me for a second. I messed up my pages. Yeah. Besides this, French Air Force Unit N-124 aircrafts had the same symbol. Russian ruble, printed in 1917, had the same symbol. Westfield Yearbook 1913 edition had a hooked cross on its cover page and is depicted as the Gamedion. Gamedion is a Greek form of a phylloft or a Christian cross used in churches all over Europe and other parts of the world as well. So, or 1868, the excavation was done while they were discovering the city of Troy, lost city of Troy. So during the excavation, they found a similar symbol, and the description given for the symbol that they found in the lost city of Troy in 1868, I'm quoting unquoting it. It said, "This is a sort of cross whose 4 arms are bent at right angles and resemble 4 conjoined Greek gammas." So gamma का symbol ऐसा होता है, अगर if you conjoin 4 gammas to the center, it becomes hooked cross, Haken-KREUZ, not swastik. इसके अलावा बहुत और स्टडीज हैं. The word swastik was also used for I'll skip this part now because descriptions are numerous, examples are innumerous. This symbol had been used all over Europe, and the only substituted word, if not Haken-KREUZ, is the Gamedion, but never swastik. So ये swastik कैसे बन गया? हिटलर ने जब इसको यूज किया तो ये swastik कैसे हो गया? हुआ यूं कि बहुत से जो
क्रिश्चियन फेलोशिप्स थी, उन्होंने इसको अपोज किया दैट यू आर यूजिंग हेकन क्रूज एंड हिटलर इज अ बारबेरिक, सो इफ यू कंटिन्यू यूजिंग it's going to defame one religion, right? So जो उसकी translations निकाली गई, the translations that came out of Mein Kampf and the speeches of Hitler, that is when word swastik was used. But before the translations came in, it was Haken-Kreuz. After the atrocities done to the Jews, after the killing, the mass killing of Jews during the Holocaust, it was decided that we are not going to call this Hitler's symbol as Haken-Kreuz anymore. It will be called swastik. And then after, all the translations that came out, except the main book, handwritten by Adolf Hitler himself, all other books use the word swastik, and this is how swastik was defamed. My only purpose of this vlog is to spread some education, right? I don't have any grudges, any bad feelings against Haken-Kreuz as well, right? It is a sacred symbol to the Christians, and it should remain. People like Hitler may misuse a lot of things. He must have misused not just swastik, not just Haken-Kreuz, but a lot many other things. Let us not defame everything. Haken-Kreuz is a sacred symbol. It should be popularized again as a sacred symbol. It should be revived as a sacred symbol. People should not be ashamed in using Haken-Kreuz or swastik for that matter because somebody misused it. The biggest slap on somebody like Hitler's face would be giving its lost identity back, bringing its lost power back. बताना दुनिया को कि जो ये Haken-Kreuz है, ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, जो स्वस्तिक है वो हिंदुइज्म का सिंबल है, इसे मिसयूज किया गया और अब मिसयूज नहीं किया जाएगा. If he can misuse it, we can reuse it and we can bring its lost glory back. So दोस्तों, इसी के साथ मैं I'll conclude my today's vlog. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. Please don't forget to like, share, subscribe, comment and bell icon दबाना मत भूलिए यार. ठप्पा लगाइए बेल आइकॉन पे और मैं जल्दी मिलूंगा आपसे किसी न किसी और नए व्लॉग के साथ. इंटरेस्टिंग बात करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.